Hello all. Another video today. आज के in this video we'll be talking about Pro V Agro. इसका short form है. The entire name of the company is it's called Proventus Agrocom Limited. So ये लोग करते क्या है? So these guys have a business of selling dry fruits and makhana. So I didn't really know the Indian name for makhana, जो lotus seed बोलते हैं हम, तो इसको मखाना किया जाता है. So this is what they do. Okay, why are we covering this today? So इनका जो रिजल्ट आया था, I think it came on 15th, which is yesterday, and the numbers were insane. The sales for FY26 grew by 60%, and these guys do not report quarterly results, but they report results on a half yearly basis, and on a half yearly basis sales grew by almost 100%. Last year कुछ 288 crores का था in the H2 of March 2025, and in H2 of FY26 they have done a sales of about 530 crores. And that's why, and that is the exact reason we had to understand what is the business model, and why is it the company is has performed so well. जब मैंने पढ़ा तो द सेक्टर आई मीन द कंपनी लुक रियली इंटरेस्टिंग. मतलब यूजुअली एफएमसीजी कंपनी क्या करते हैं, मतलब 10% 20% का ग्रोथ आता है मैक्स टू मैक्स. 20 तो बहुत बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने. सो द यूजुअल ग्रोथ रेट ऑफ एफएमसीजी बिजनेस इज अराउंड 10 to 15%, बट दिस वॉज ग्रोइंग एट अराउंड 60%, which is crazy, right? So I wanted to know कि क्या कर रहा है, what are the things they are doing differently. Okay, बहुत बक कर लिया, अभी चलते हैं. What do they exactly do? So if in short we can tell that they sell healthy snacks and dry fruits, okay, under the brand name Provi. Okay, now before going into the company exactly, let's understand what the industry is, right? आपने देखा होगा there is a shift from unhealthy snacks जैसे समोसे और deeply fried food items to healthy options like dry fruits, these protein bars and other makhana seeds, which is their one of their major product. ऐसे वाले items वो. So this shift is what the company is playing on. So what are the industry is under immense tailwinds because of the increasing per capita income in India and higher disposable income. ये भी it is facilitating the growth in these premium segments. मतलब समोसा तो आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, because the dry fruits are costly and the fancy food items are costly. It is a premium segment and they can charge high margins. ठीक है. Okay, and then finally management में कहा है कि in the recent GST rate cut, the rates had gone for the rates for dry fruits had gone from 18% to 5%. So इसका भी इनको एक डिमांड का बूस्ट मिला है. Okay, cool. That was the overview of the industry. Basically the industry is a sun rising sector basically. मतलब ऐसे डूबा हुआ सेक्टर नहीं है जहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं है, 10% का ग्रोथ पा रहा है, मैनेजमेंट 5% का गाइडेंस दे रहा है, ऐसे वाला सेक्टर नहीं है. This is it is part of that sector, but this is a small subgroup in that sector which is growing very fast. Okay, one data point which I found interesting in the management PPT was that कॉन कॉल अभी तक नहीं हुआ है इनका. दिस कॉन कॉल विल हैपन, आई गेस अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया था, इट विल हैपन ऑन 20th. सो लेट्स सी व्हाट दे से. बट अकॉर्डिंग टू द पीपीटी इट सेज दैट द average dry fruit consumption in India is 600 grams per person per year, and this number in Southeast Asia, China and other Asian countries is 2.5 kgs, and US is at 4.7 kgs. Obviously these are developed markets. The per capita income is very different. You can't compare like an apple to apple, but this is the number which possibly we can expect like in the future, right? So there is backing that the market is huge. That's what I wanted to highlight in this slide here. Okay, then so basically as I said in the first slide, they have two divisions. One is the dry fruit, मतलब normal dry fruits import करते हैं क्योंकि हमारे देश में तो बहुत dry fruits नहीं बनता है. Where will you grow dates in India? So what happens is they import dates and other walnuts, and they have a big slide in the management PPT. You can check out that. They have put which country is which dry fruit they import and from which country. So exactly सारे import करते हैं and they sell it out in India.
दिस इज़ नॉट मच ऑफ अ वैल्यू एडिशन, राइट? मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, इट इज़ जस्ट ट्रेडिंग लाइक ऑफ अ बिजनेस. सो इसमें थोड़ा मार्जिन कम होते हैं, दो इट इज़ ड्राई फ्रूट्स एंड इट इज़ supposed to be expensive. They make margins, but relatively to the other segment, which is the wholesome nutrition, इनको that is the name they have given it to this segment, उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है. Why have I talked about is this? So basically before going into the margins part, what is wholesome nutrition? Wholesome nutrition वही है जो मैंने पहले बताया था कि you have yoga bars, protein bars, मखानास, all other healthy मतलब snack options. That is basically wholesome nutrition. And the other segment is normal dry fruits का आपका trading. Based on this, what we can see here is in FY20, even FY24 if I'm not wrong, the share of the dry fruits was 40%, and share of the wholesome nutrition was 40%, and this year it has gone up to 58% of the total revenue. And because of this, the margins have also gone from 17 to 21%. I guess it's not 27, that's wrongly put in here, it's 21%. That is the thing which I wanted to highlight here, because of which आप ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई यू हैव अ हायर मार्जिन. वन मोर गुड साइड इन द बिजनेस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या क्या है और कहाँ कहाँ है. So they have an existing capacity in here in Mumbai of 1.5 lakh pouches per day. Pouches, I guess, is the metric which is used in measuring the capacity here. मतलब आप दिन में 1.5 lakh pouches मैन्युफैक्चर कर सकते हो, मतलब पैक कर सकते हो, वैसे वाला वर्ड सेटअप. अपकमिंग कैपेसिटी क्या है? अपकमिंग कैपेसिटी है इन सूरत of 4 lakh pouches per day, and this is coming, I mean this is going to be commissioned in H1 of FY27 जो कि अभी इस साल में होगा. एंड दे ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी इन बिहार. सो ये बिहार वाला फैसिलिटी क्या है? बिहार वाला फैसिलिटी है मखाना का. मखाना इज़ आई सेड लोटस सीड, जो आपका वो वाइट वाला बॉल्स बनता है, उसमें ये लोग फ्लेवर बना के बेचते हैं. Apparently 90% of entire India's capacity is concentrated in Bihar. Finally बिहार में तो कुछ हो रहा है. तो the 90% of the capacity is concentrated in that place, and these guys have a plant which has been operational in FY26 का end में, मतलब अभी एक दो क्वार्टर में ये ऑपरेशनल हुआ था. So this is also going to be an addition to their capacity. But दिक्कत ये है कि इस साल के पहले मतलब FY24 में उन्होंने FY25 में इन लोगों ने FY28 का गाइडेंस दिया था ऑफ 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. तब इनका रेवेन्यू होगा कुछ 400 करोड़, मतलब ऑन एन एनुअल बेसिस, एंड दे हैड गाइडेड फॉर 1000 करोड़ रेवेन्यू इन FY28, विच इज़ क्रेजी, राइट? बट दिक्कत यह है कि FY26 में ही इनका रेवेन्यू हो गया कुछ 950 ऑड करोड़, मतलब अभी जो रिजल्ट आया वो उसका बात कर रहा हूँ मैं. तो दे हैव रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ 950 ऑड करोड़, and they have revised the guidance just by 100 crores. So FY28 tak they are saying they will make 1100 crores. Okay, maybe this is a conservative estimate and they want to under promise and over deliver, but मार्केट इसको थोड़ा लाइटली लेगा कि आप 900 करोड़ तो अभी कर चुके हो, आपका कैपेसिटी तो मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना हो रहा है एक साल में, और अब बोल रहे हो आप सेल्स ग्रो करोगे बस 20-25% में. मार्केट माइट नॉट टेक दिस वेल, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ विच द डे ऑफ द रिजल्ट स्टॉक कुछ गिर गया था 5% पे. आई एम नॉट टेलिंग दैट इज द ओनली रीजन, बट हो सकता है दिस वॉज द रीजन, एंड मार्केट डिड नॉट लाइक द गाइडेंस गिवन बाय द मैनेजमेंट. ओके, दिस वॉज वन थिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये लोग इन लोगों ने क्या किया है, दे हैव दे हैव स्पेंट लॉट ऑन ब्रांड बिल्डिंग. सो इनका एड एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंसेस कुछ 30 करोड़ से कुछ 70-75 करोड़ का हो गया साल भर का, विच इज़ नाइस, राइट? बिकॉज अगर आप मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हो, सेल्स एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो, इनका सेल्स एम्प्लॉयज़ भी आई थिंक अराउंड 300 टच करके फ्रॉम बेस ऑफ अराउंड 150 और समथिंग. सो विच इज़ क्रेजी, राइट? सो आप मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हो, सेल्स में बंदे हायर कर रहे हो, एवरीथिंग टेक मार्क फॉर सेल्स ग्रोथ. एंड दे आर ऑल्सो वेंचरिंग इन टू क्विक कॉमर्स, मतलब अभी भी है, बट दे आर ट्राइंग टू डीपन देयर SKU अवेलेबिलिटी across the cities. These are the things they are they have highlighted that these are the levers for the 1100 crores का sales guidance which they have given for FY28. 8 by 27 भी नहीं, FY28 का, ठीक है. ओके, फ्यूचर आउटलुक, या दैट्स व्हाट FY28 का गाइडेंस दिया है इन लोगों ने फ्रॉम 1100 crores का रेवेन्यू का. दिस वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 1000 crores.
और ये वाले मतलब these are the levers which will be facilitating this growth in their revenue. But अभी जाते हैं risks पे. Risks क्या है? One thing is that they are heavily dependent on imports for importing the dry fruits, because सारे उनका import से बनता आता है, and because of the supply chain disruption due to the West Asia conflict हो सकता है इनके supply disruptions हो. I'm not sure, we'll have to we'll have to check in the con call. दूसरा दिक्कत है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऐसा कुछ रेट्स ये लोग नहीं देते हैं. वी डू नॉट एग्जैक्टली नो इफ द एग्जिस्टिंग प्लांट इज, अभी पता चला आपका एग्जिस्टिंग प्लांट तो 50% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है. ऑब्वियसली नहीं होगा. द मैनेजमेंट इज नॉट सो स्टूपिड इनफ टू ओपन अ प्लांट ऑफ 4.5 lakh कैपेसिटी, 4.5 lakh pouches का कैपेसिटी, while your existing plant is at 50%. I'm just giving a case scenario. So what I'm telling is, मतलब you exactly do not know what is the capacity utilization which is there. So it is which it lacks a red flag before making your purchase decision, or yeah. And one more risk here is that the Surat plant can get delayed. The go live can be pushed. अभी तक इन लोगों ने commission बोला है. It is not getting operationalized in H1 of FY27. They have just said that it is getting commissioned. So ये facility बन जाएगा, but कब operational होगा, no idea. Yeah, these are the key risks to watch out. Con call होगा on 20th. If there is any big update in the con call, I'll make another video. Do let me know your thoughts in the comments.